Hello students, today we will read our chapter number 5 of geography, which is minerals. So what are minerals? A mineral is a solid chemical compound that occurs naturally in a pure form. Minerals are most commonly associated with rocks due to the presence of minerals within rocks. मिनरल्स जो हैं जिन्हें हम खनिज बोलते हैं एक ठोस रासायनिक यौगिक होता है जो अपने शुद्ध रूप में प्रकृति में पाया जाता है। आमतौर पर ज़्यादातर खनिज चट्टानों के साथ जुड़े होते हैं क्योंकि इनकी परतें जो हैं चट्टानों के बीच में मौजूद होती हैं। मिनरल्स फॉर्म a vital part of our day-to-day life. You will hardly find anything around you that does not contain any mineral in it. From the salt that you add in your food to the pen that you write with, the cream that you apply on your face and the car that you ride, everything is made of minerals. Write the names, you can write the names of at least 5 different items of daily use and mention the minerals present in them. So जो खनिज पदार्थ हैं वो हमारे खनिज जो हैं वो हमारे रोज़ाना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हमारे आसपास मुश्किल से ही कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसमें मिनरल्स ना हो, खनिज ना हो। हमारे खाने में डाला जाने वाला नमक, पेन जिससे हम लिखते हैं, कार जो हम चलाते हैं, जहाँ तक कि क्रीम जो हम अपने फेस पर लगाते हैं उसमें भी मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स आर द रॉक फॉर्मिंग मटीरियल्स। ऑल रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर मिनरल्स. A rock that has a large concentration of a particular mineral is called the ore of that mineral. All minerals have a definite chemical composition and consist of one or more elements. They are identified on the basis of their physical and chemical properties. मिनरल्स चट्टानों द्वारा बनाए जाते हैं। सभी चट्टानों में एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। अगर किसी चट्टान में कोई ख़ास खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो उस रॉक को हम उस मिनरल की ओर बोलते हैं। सभी मिनरल्स जो हैं उनकी एक निश्चित रासायनिक रचना होती है जिसमें एक या अधिक तत्व होते हैं। इनकी पहचान हम उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर कर सकते हैं। Now, types of minerals. Minerals may be organic in origin like coal and petroleum or inorganic. So, what are organic or inorganic minerals? Organic minerals which are produced by or using natural materials without artificial chemicals, and inorganic minerals which are produced with using of artificial chemicals. Organic minerals are also called mineral fuels or fossil fuels. Inorganic minerals are classified into two groups, metallic and non-metallic. Metallic minerals are those from which metals such as iron, copper, aluminium, gold and silver are derived. They are found as ores. What are ores? Ores means a rock or a part of earth from which metal can be taken. And non-metallic minerals include limestone, sulfur,
potash, nitrate, mica, gypsum. Most of the metallic minerals are found in igneous and metamorphic rocks, while the non-metallic minerals are found in sedimentary rocks. Some minerals are also found in the alluvial deposits on river beds. So what are alluvial deposits? Alluvial is a kind of soil deposited by rivers. It consists of silt, sand, clay as well as organic matter. Thanks student. In our next video we will read about the metallic and non-metallic minerals in detail.